हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। ओके। बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास नाइन्थ का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और हम लोग क्या सीख रहे थे, नंबर सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था। ठीक है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन है। देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू आंसर इन द पोल सेक्शन। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। सारे बच्चों को इसका उत्तर देना है पोल सेक्शन में। तो सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल में। जिनको नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ कि ये कैसे करते हैं पोल में उत्तर। जिनको भी नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ कि पोल में कैसे करते हैं उत्तर। देखो बेटा, ये है आपका मोबाइल का स्क्रीन। अभी कोई बच्चे ने बोला था कि सर आज मेरी ये पहली क्लास है, तो मैं उसको सिखा रहा हूँ। देखो, आपको ये मोबाइल स्क्रीन है, यहाँ पे इस प्रकार से 3 डॉट बना होगा। इसको जल्दी से क्लिक करो। अपने मोबाइल में मेरे साथ क्लिक करते रहना, ठीक है बेटा। जिन्होंने अभी को क्लास ज्वाइन की है नई एकदम और आज पहली क्लास है उनकी, तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना होगा, यहाँ पे स्क्वायर बना होगा, यहाँ पे एक सर्कल बना होगा, है ना। और इसके नीचे ही लिखा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटीज पे क्लिक करिएगा। जो ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तब आ जाएगा इस प्रकार से पोल्स। ऐसे पोल्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा वन एक्टिव। यहाँ लिखा रहेगा वन एक्टिव। इसको भी क्लिक कर देना। इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे लिखा होगा रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। इसका नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, इसका नाम सी, इसका नाम डी। जो भी आंसर करेक्ट होगा उसको क्लिक करना। उस आंसर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वोट का बटन आ जाएगा, VOTE। इस वोट के बटन को दबा देना। जब आप इस वोट के बटन को दबा दोगे तो आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। दैट्स हो इट। गया सर। ओके, वेरी नाइस। जिसका आज पहला क्लास है, ठीक है, क्या उसको समझ में आया? माइक ऑन यस है? सर। ओके, वेरी नाइस। सारे बच्चे उत्तर करिए, ठीक है। आपके पास बस 5 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 5 सेकंड। बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है उन्होंने उनको देना चाहिए उत्तर, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका आंसर नहीं करेंगे ना पोल में तो आपकी अटेंडेंस नहीं चढ़ेगी फिर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस चढ़े तो जल्दी से पोल में इसका उत्तर करो। Student, be careful when you are answering this question. Take your time, then choose the correct answer. Don't be in a hurry. Okay? बहुत ज्यादा तेज रहने की जरूरत नहीं है। तेज मतलब कि जल्दबाज, है ना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। Take your time and then answer in the poll section. You have only 5 seconds left. After that, I will delete poll section. Okay? The question is very easy. जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है प्लीज आंसर करो, अदरवाइज आई विल नॉट मार्क। ओके, अदरवाइज आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, now I am deleting the poll section and turning on the chat section. Okay.
ठीक है बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन सेज there are 324 children in a class. If each children have 15 books, then what will be the total number of books? बोला ही जा रहा कि 324 स्टूडेंट हैं। इफ ईच स्टूडेंट हैव 15 बुक्स, ठीक है, तो 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे बेटा कि 324 आ जाए। 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि क्या आ जाए, 324 आ जाए। इसी x की वैल्यू हमें आपको बतानी है। सॉरी 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 सॉरी, ये बोल रहा है ना कि देर आर 324 चिल्ड्रेन और ईच स्टूडेंट हैव 15 बुक्स, तब कितने बुक्स होंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 324 का मल्टीप्लाई 15 में। चलिए मल्टीप्लाई करिए मेरे साथ। 5 4 20, इसको जीरो लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 5 2 10 एंड 10 और 2 12, 1 कैरी हो जाएगा। 5 3 15 15 एंड 15 1 16, ये हो जाएगा वन टाइम में, यानी ये हो जाएगा 4 2 1 2 3 1 3 जीरो। अब ऐड करना है, 0 4 2 6 6 2 8 एंड 3 और 1 4 होता है। 4860। टोटल बुक्स की संख्या कितनी होगी, ए वाली पार्ट, यानी कि 4860। सर जी पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा बेटा क्योंकि मैंने बंद कर दिया। अभी आएगा जब मैं दोबारा क्वेश्चन दूंगा ना बेटा, तब जाके आएगा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ बेटा, और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों इसका उत्तर करो पोल में। कितना में कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इफ यू डोंट आंसर आंसरिंग इन द पोल सेक्शन, देन योर अटेंडेंस विल नॉट मार्क, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अटेंडेंस लगे, तब तो आप आंसर करो। नहीं चाहते हो कि अटेंडेंस ना लगे, अब्सेंट कर दिया जाए, तो कोई बात ही नहीं है फिर बेटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप देखो। इसलिए बार बार बोला जाता है ना कि आप अटेंडेंस के लिए क्या करिए, पोल में आंसर करिए, क्योंकि उससे ये होता है
कि आप लग जाता है, पता लग जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका अटेंडेंस तो बिल्कुल लगा दिया जाएगा, उसके अटेंडेंस को रोकी नहीं जाएगी, है ना, ये वाली बात है। बेटा 5 सेकंड और, सिर्फ 5 सेकंड, फिर हम बंद कर देंगे पोल। ओनली 5 seconds आर लेफ्ट एंड देन आई विल डिलीट पोल सेक्शन। ओके, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4। हेलो सर। हाँ जी। सर आंसर है 25। बेटा ये काम नहीं करना है, आगे से आप आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। अगर आपको आंसर देना ही है तो आप पोल में दीजिए। क्या आपने पोल में आंसर किया? क्या सर? पोल में आंसर किया आपने? पोल में? हाँ, पोल में आंसर किया आपने इसी का? यस सर। ठीक है। एक ओके बच्चों, नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन से इज 625 को आपको डिवाइड करना है 25 से। ओके, so we can write this like this. Here when you divide, 6 is more less than 25, and that's why we will take 62. Okay, when we get 62, then we can divide it by 25. 25 twos are 50. Okay students, 50। 2 में से 0 को माइनस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। 6 में से 5 को माइनस कर दो बेटा, 1 हो जाएगा। एंड दैट्स वाई इसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। नाउ you have to tell the table of 25. When you see that 25 multiplied with 5, then you will get 125, and that's why the answer will become 25 and the remainder will be 0. So the answer is 25. It means option number C. बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? इफ यस देन यू कैन टाइप वाई। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करो। चलो बच्चों, इसको भी सॉल्व करो, पोल में आंसर करो इसका। प्लीज आंसर इन द पोल सेक्शन। You have to divide 2310 with 11, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए।
बाकी लोग भी आंसर करिए, सिर्फ 17 बच्चों ने उसका उत्तर किया है, बाकी लोग भी उत्तर करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल डिलीट कर रहा हूँ और चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, देखना ध्यान से। 11 को, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। और एक सेकेंड, ये है 2310 एस, ठीक है, इस प्रकार से 2310 है, उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। नाउ यू हैव टू डिवाइड 2310 विथ 11, देन फर्स्ट ऑफ ऑल 11 टू जा 22 हो जाएगा। ओके, नाउ यू विल गेट 1 as a remainder, and then it will remain as it is. Now you will read the table of 11, then you will get 11 1 is 11, and that's why it will become 0. Here you can see that there is a 0. Okay, so you have to increase 1 0 after 1. So the answer will be 210, 210 होगा इसका करेक्ट आंसर, और इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सबको क्लियर है? वी हैव टू इंक्रीज 1 0। ओके, एक जीरो में बढ़ाना पड़ेगा। सबको समझ में आया ना? किसी को भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लो, यहाँ सर हमें इस जगह पे प्रॉब्लम है, आप हमें दोबारा समझा दो। ओके, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। सारे बच्चे इसको बताएंगे, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। You have to answer in the whole section. Okay.
ओके बच्चों, so the question says find the quotient and remainder. You have to answer quotient and remainder. Okay, so I can see that 17 students have answered, but rest of you didn't answer yet. So please answer in the poll section. Okay, सभी बच्चे पोल में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। कोई भी बच्चा ऐसा मत करो कि आप लोग पोल में बना दो, है ना। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर कर लेंगे, क्योंकि जब आप पोल में आंसर करते हो तो पता लगता है कि हाँ, आप किस प्रकार से पढ़ाई सीख पा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और हाँ, अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैंने चैट ऑन कर दिया, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। So everyone is saying, sir, D will be the correct answer. Okay, let's see. Let's see. 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 हो जाएगा। रिमाइंडर इस प्रकार सभी के लिए 9 एज इट इज आ जाएगा। 6 3 जा 18. So when you subtract 18 from 19, then you will get 1, and you have to read table for 6 or one time. So 6 1 are 6. So the remainder will be 5. बेटा रिमाइंडर 5 होगा और क्वोशेंट कितना होगा? क्वोशेंट 131 होगा। डी वाला आंसर करेक्ट होगा, बाकी आंसर गलत है। ध्यान से देखो। सब कुछ समझ में आया बेटा? If is it clear to everyone, then type Y, and if not clear, then type N. Clear? Okay. Now we will start our next topic, and that is operation on integers. Everyone put the heading in your notebook, operations on integer. Okay, very important topic, very important topic. ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ये हेडिंग लगा दीजिए अपने नोटबुक में। हम लोग इसको आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हर लोग जानते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले सीखेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या सीखना है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, मेरी बात समझ लीजिए। अगर आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर सिखाऊंगा मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अब क्या होगा? अब यहाँ पे दोनों ही नंबर या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाट वी आर गोना स्टडी? क्लियर है सबको? ओके, सो if you want to take screenshot, then do it, then we will move further. ओके, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। सी, मैंने ये बोला कि हम लोग इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ना, कि आपको किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराना होगा। आप भी जानते हो कि जो इंटीजर होता है वो 3 टाइप का होता है। अगर हम बात करें इंटीजर्स के बारे में, तो स्टूडेंट आई हैव taught you that integers are of 3 types. The first is positive integer, second is negative integer, and the third is zero integer. Okay, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। तो हमने ये बोला कि पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कराएंगे। एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 5 है। ये वाला जो 10 है बेटा, ठीक है, ये वाला जो 10 क्या है? पॉजिटिव है।
ये वाला जो 5 वो भी अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जब ये दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 5 जा 50 हो जाएगा। 10 5 जा क्या हो जाएगा, 50। ओके, बहुत बढ़िया। तो कोई बच्चा बताएगा कि ये जो 50 है वो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है, कौन बच्चा बताएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट वेदर 50 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, ऑन मल्टीप्लाइंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी गेट ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एक सिंगल पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। प्लीज नोट इट डाउन, please note it down, or you can take a screenshot as well. You can take a screenshot as well. Have you take the screenshot? Have you take the screenshot? Okay, now we will move further. Here you can see there is a sign regarding this multiplication. So one number is positive and the second number is also is positive, and you have to multiply these both positive numbers, then the answer will be also a positive integer. Please note it down, this is a very super duper important. Please note it down. Please note it down. When you multiply a positive integer with a positive integer, then you will get a positive integer. This is rule. Okay. And this rule should be remembered, all of you. Okay. So class, can you remember it? How many of you have remembered this? How many of you have remembered this? Please tell me in the chat box. Okay. This is a super duper concept. Okay. You have to learn this. Now you can see on your screen that there is a question -10, you have to multiply with -5. Okay, so the first number is in negative, isn't it? The first number is in negative and the second number is also a negative number. So when you multiply two negative numbers, then you will get a positive integer, a positive number. Let's see how you will solve it. So 10 5s are 50. Okay, and a minus multiplied by minus will become positive. So the answer will be for plus 50. You can also write it like this 50. तो या तो आप प्लस 50 लिखो, ओके, या तो आप प्लस 50 लिखो या फिर बस 50 लिखो, दोनों ही बातें सेम है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा ना, मैंने ये कहा कि जब भी आप दो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, निगेटिव मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। यही रूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सर जी, बट जिसका साइन बड़ा होता है वो आता है ना? जो आप बोल रहे हो ना वो जोड़ने में आता है, ऐड करने में आता है। जैसे कि मान लो अगर यही होता है ऐसे -10 + 5 ऐसे, नहीं नहीं रुक जाओ, तुमने इसको माइनस लिया ना, माइनस ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन है, इसका मतलब ऐड होगा तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 10 बड़ा है इसलिए इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, -15 होगा। इज इट ओके क्लियर? सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चों इस चीज को याद रखना है कि कब प्लस कब माइनस होगा, आखिर ये मल्टीप्लाई है एंड दिस इज सबट्रैक्शन। ओके, so here is a concept. The concept says on multiplying two negative integers we get only one positive integer, and that's why I have told you that how will you solve this question. Okay, so the rule is minus multiplied by minus will become plus. Please note it down.
Please note it down, or you can also take a screenshot. Okay. Now here is a question. Minus 10 multiplied by 5. Here you can see that the first number, which is 10, is negative. Okay, minus 10. And the second number is in positive. First number is negative and second number is positive. So you can see that you have to multiply a negative number with a positive number. In this case, the result will be negative. Okay. In this case, the result will be negative. It means जब एक नेगेटिव नंबर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव में आता है. तो उस हिसाब से 10 into 5 क्या होगा? 50 होगा. But the answer will become minus 50. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? So the answer will be minus 50. This rule is super duper important, and that's why I am telling you, please learn this, or you can take a screenshot as well. Okay. So the rule says by multiplying one positive and one negative integer, we get only one negative integer. It means when you multiply one positive integer with a negative integer, then you will get a negative integer. You can say it vice versa, like this. When you multiply a negative number with a positive number, then you will get a negative number. Okay, this is the criteria. Please note it down. Here you can see there are two criteria. First positive, second negative. First negative, second positive. Is it clear? Is it clear to everyone? सर अगर दोनों तरफ प्लस प्लस हो तो उसे क्या बोला जाएगा, माइनस या प्लस? नहीं, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो प्लस ही आएगा. प्लस. हाँ, देखो अगर दोनों ही तरफ प्लस हो तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा. देखो याद करो, पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 था. ठीक है, ये जो 5 था वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होगा. 10 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस है. मल्टीप्लाई करा के 50 आएगा, प्लस 50 लिखोगे. प्लस को कभी लिखते नहीं, इसलिए योर आंसर विल बी 50. इज इट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now you can see there is an example. You have to solve this. Everyone, please solve this in your notebook and then tell me answer in the chat box. Please solve in the textbook and then tell me the answer in the chat section. Okay, I can see that many of you are given correct answer. Yes, I can see that many of you is giving correct answer. Okay. Okay. So you can see the question is 12 multiplied by minus 5. 12 multiplied by minus 5. What is the sign of 12? Can anybody tell me in the chat section? What is the sign of 12? What is the sign of 12? Yes, Pratap Ram, Priya Tiwari, good. Vivek Joshi, very nice. Ashish Gaming, Suraj Yadav, Abhishek, Sachin Mishra, okay. Sachin Mehra, sorry. All these students are saying that the sign for 12 is plus. And what is the sign for 5? What is the sign of 5? Yes, negative. Okay, negative. So basically you have to multiply a positive number with a negative number. So the answer will be negative. See, here is the criteria. The criteria says
When you multiply a positive number with a negative number, then the answer will come in negative. So 12 5s are 16, and the sign is negative, and the correct answer will be minus 60. Okay, class, have you got this? Have you got this? Sir. Everyone, please tell me in the chat section. Have you understood this? Okay. The answer is minus 60. Okay. अब मैं जितना भी मैंने सिखाया, जितना भी मैंने पढ़ाया, इसको एक पेज पे कर दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकें या फिर इसको नोट कर सकें एक सिंगल सीट पर. So I have taught you that when you multiply a positive number with a positive number, then you will get a positive sign. When you multiply a negative number with a negative number, then you will get a negative, positive number. And this both cases says that when you multiply a positive number with negative number, or when you multiply a negative number with a positive number, then you will get a negative number. These are super duper important. Please note it down or take a screenshot. Have you take it down? Have you noted down? Sorry, have you noted down? Or please take a screenshot. Okay. Okay. So we are gonna study some more topics, but first of all, you have to answer some questions, and those questions should be answered in the poll section. Okay, students. Those questions should be answered in the poll section. The question is. I am disabling the chat section and turning on the poll section. You can answer in the poll section. Everyone, please participate in the poll section and give your answer in the poll section. Okay. This is mandatory for all the students. I can see that 11 students have answered. Out of them, 2 have answered incorrect and 9 have answered correct. Only 5 seconds are left. After that, I will delete poll section. Okay, students, I am deleting the poll section. So please answer in the chat section. Okay. Okay. As you can see that you have to multiply minus 11 with minus 9. Okay.
So what will you get when you multiply 11 with 9? So the answer will be 99. But you can see that the sign of this 11 is negative and the sign of this 9 is negative. And I have told you that when you multiply negative with a negative, then the answer will be positive. So it will be positive 99. Okay, or you can write it down like this 99, because I have told you that positive को लिखते नहीं हैं. Okay, so the answer will be part A. Part A. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? If anybody have any type of doubt, then you can ask me. Okay, you can turn on your mic, or you can comment in the chat section. I will definitely reply that. Okay. Okay. No issues. Okay. Very nice. Now please answer this question. You have to answer in the poll section. Go in the poll section and hit the right answer, because I have disabled the chat section. सर आंसर दे दिया. ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए. और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके बच्चों, अब मैं पोल को डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, और चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ. सारे बच्चे बताइए. देखो यहाँ पे लिखा है -17 मल्टीप्लाइड बाई 9. So the sign of first number is negative and the sign of the second number is positive. And I have told you then that when you multiply a negative number with a positive number, then the answer will become a negative number. Okay, so 17 nines are 153. 153. And the sign must be negative. So the correct answer will be -153. Option number A is correct. Option number A is correct. Okay. Option number A is correct. Now solve this question. Solve this question. The question says you have to multiply 12 with -11. This is a very easy question, like the previous one. Please solve it and answer in the poll section. Previous question was same like this.
Okay, students, please answer. Okay. 5 students are left. Please answer those 5 students. Now it become 4. 4 students are left. You have 10 seconds only. Okay. You have only 10 seconds. बच्चों जल्दी से इसका उत्तर करो पोल में, ठीक है? सारे बच्चे उसका उत्तर करिए। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तुरंत आ जाएगा, कुछ भी टफ है ही नहीं। ओके, चलो मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, आंसर कर दो इसका चैट में अब। So the question says you have to multiply 12 with minus 11. Okay, you can see that the sign of this 12 is positive and the sign of this 11 is negative. 12 multiplied by minus 11, it will become 132. और मैंने आपको सिखाया है कि जब एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -132. इट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी -132. -132. So the students, class is over now. You can go, and if anybody have any type of doubt, then you can ask me. Okay. If anybody have any type of doubt, then you can ask me. Class is over. Okay. Bye bye. Take care. Good night, sir. Good night. Good night.